Third method is capitalization method. Under capitalization method, there are two profit: capitalization of super profit or capitalization of average profit. Now let us discuss both these capitalizations one by one. First of all, capitalization of average profit. The steps are: ascertain average profit on the basis of few past years. Then capitalize the average profits on the basis of normal rate of return. उसके लिए क्या फॉर्मूला हम अडॉप्ट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. And then ascertain actual capital employed. Actual capital employed, as we have discussed earlier also, is equal to total assets minus outstanding liabilities. And then the final step is to compute the goodwill. In case of capitalization of super profit, what we do is, first of all, ascertain the capital employed with the same formula, that is total assets minus outstanding liabilities. And then calculate the normal profit on capital employed, calculate the average profit, calculate the super profit, and then multiply the super profit by the years of purchase, means goodwill. Now let us take one example to calculate the goodwill according to capitalization of average profit and capitalization of super profit. Example is, total assets are worth rupees 50,000. Normal rate of return is 10%. And years are 2005, 6, 7, 8 and 9, means 5 years. Profits and losses with respect to these years are 15,000, 10,000. In the year 2007, there was a loss of rupees 6,000. In 2008, again there was profit 5,000, then 6,000. Now, first of all, we will be calculating the average. Average will be 15,000 plus 10,000 minus 6,000 plus 5,000 plus 6,000 divided by 5, means 6,000. After calculating average, we will be कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट. और कैपिटलाइजेशन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. So here the normal rate of return is 10%. It means the average profit capitalization is equal to 6,000 multiplied by 100 divided by 10, means 60,000. And goodwill will be capitalized value minus net capital employed or net assets. That is equal to 60,000 minus 50,000, means 10,000. Now let us take the second case, when we are to calculate goodwill on the basis of capitalization of super profit. First of all, our average profits are 6,000. Normal profits are 50,000 is the capital employed multiplied by 10% of the normal rate. It means the normal profits are 5,000. So super profits are 6,000 minus 5,000, means 1,000. Next step is to capitalize the super profit. It will be super profit multiplied by 100 divided by the normal rate of return. So super profits are 1,000 multiplied by 100 divided by 10, means 10,000. So 10,000 is the value of goodwill as per capitalization of super profit method. Now let us see the treatment of goodwill in the books of account. Now there are two methods in which the goodwill is treated. The first one is the premium method and the second one is revaluation method. Premium method is followed when the partner pay his share of the goodwill in cash. Revaluation method is followed in the case when the partner does not bring his share of goodwill. Now let us take case 1, premium method. There are two possibilities in premium method. The first case is if the partner pays his share privately to the old partners, then there will be no entry in the books of accounts. But yes, if he pays through the firm, then there will be certain entries in our journal. अब वो एंट्रीज क्या होंगी? जब वो पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन द बिजनेस टू गुडविल अकाउंट. और जब यही गुडविल हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को देते हैं, क्योंकि अभी एंट्रीज फर्म के थ्रू हो रही है, इसलिए जर्नल में हमें ये शो करना पड़ेगा कि हमने गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया.
और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सी रेशियो को इस्तेमाल करेंगे? वो रेशियो जो पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि नया पार्टनर आ गया है। तो नए पार्टनर के आने की वजह से जो गुडविल का शेयर आएगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। सो अवर एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट अस टेक वन एग्जांपल. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. उन्होंने C को एडमिट कर लिया और C का शेयर था 1/4. C brings capital rupees 60,000 and the required amount in cash. Goodwill was valued at rupees 40,000. A and B withdraws their share of goodwill. New partner sharing ratio was 2:1:1. So our journal entry will be cash account debit to goodwill account to C's capital account. Now C's capital is very clear, वो 60,000 रुपीस लेके आया, लेकिन गुडविल में उसका कितना शेयर था वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सी, गुडविल वॉज 40,000 एंड C's शेयर वॉज 1/4. इट मीन्स जो गुडविल C लेके आया वो कितनी लेके आया होगा? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मीन्स 10,000. सो यहाँ पे गुडविल अकाउंट के आगे हम लिख देंगे 10,000. तो टोटल कैश वो कितना लेकर आया? 60,000 प्लस 10,000 means 70,000. Then in the second entry we are going to distribute the amount of goodwill to the existing partners. So our entry will be goodwill account debit to A's capital account and to B's capital account. और हम ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करेंगे? हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ, उसको हम अब कैलकुलेट करते हैं। A's sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Old ratio A की क्या है? 3/5 and new ratio is 2/4. So sacrifice ratio comes to 2/20. Similarly, B's sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio means 2/5 minus 1/4. This is equal to 3/20. So sacrificing ratio is equal to 2/20 is to 3/20 means 2:3. So 10,000 की जो गुडविल है, 10,000 में से 2/5 हिस्सा चले जाएगा A को और 3/5 हिस्सा चले जाएगा B को, यानी कि A को मिलेगा 4,000 रुपीस और B को मिलेंगे 6,000 रुपीस. And our narration will be being a goodwill distributed to the existing partners in their sacrificing ratio. Sometimes it may happen that the goodwill already appears in the books. तो जो गुडविल अगर बुक्स में अपीयर हो रही है और हमने किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दिया है अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें सबसे पहले राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जाकर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि जो गुडविल तब तक उन्होंने अर्न की थी वो उन्होंने अपने पुराने रेशियो के हिसाब से उनको उनका शेयर मिल जाएगा. Let us understand this with the help of one example. A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C was admitted with 1/4 share. C brings a capital of rupees 60,000 and required amount in cash. Goodwill was valued at rate of rupees 40,000 at the time of admission, but our accounting books showed the goodwill of rupees 20,000. New partnership ratio is 2:1:1. When C will bring the cash to the business, we are to show that effect. So the entry will be cash account debit to goodwill account with the amount of new goodwill to C's capital account. So C has brought in 60,000 rupees as a capital and we are going to write 60,000 in front of C's capital. Now the case is of goodwill. Goodwill was valued at rupees 40,000 and C's share was 1/4. C की गुडविल के सामने हम क्या अमाउंट लिखेंगे? 40,000 multiplied by 1/4 means 10,000. So the total cash brought in by C is rupees 70,000. अब इसके बाद जो गुडविल C लेके आया है उस गुडविल को हम दोनों पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट.
10,000 की गुडविल थी, सेक्रीफाइस रेशियो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया वो आती है 2:3। तो ए को मिलेगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 4,000 और बी को मिलेगा 3/5 शेयर ऑफ 10,000 मीन्स 6,000। Revaluation method. This method is followed when new partner does not bring his share of goodwill in cash. अब वो जब गुडविल नहीं लेके आया तो हम क्या करेंगे? वी विल रेज द गुडविल इन द बुक्स बाय क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर यहाँ पे 2 केसेस आ जाते हैं। पहली बात, अगर तो बिल्कुल भी गुडविल अपीयर ना हो रही हो हमारे बुक्स में, और दूसरा केस अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही हो। केस 1, व्हेन नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, उस केस में जितनी गुडविल बनती है उसको हम रेज करेंगे फुल अमाउंट पर, और रेज करने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में, जो कि न्यू पार्टनर के आने से पहले रेशियो थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो अवर जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नरेशन विल बी बीइंग गुडविल रेज्ड इन फुल अमाउंट एंड क्रेडिटेड to existing partners in the existing ratio. Let us take one example. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C was admitted with 1/4 share. C brings a capital of rupees 60,000 and does not bring any goodwill. Goodwill was valued at rupees 40,000. New profit sharing ratio is 2:1:1. So what will be the first entry? First entry is when cash is brought in the business. So the entry will be cash account debit to C's capital account. Narration will be being amount brought in by the new partner. कितना अमाउंट लेके आया वो 60,000 रुपीज एज कैपिटल, तो वो हमने यहाँ पे डेबिट में और फिर क्रेडिट में लिख दिया। Our second entry is to raise the goodwill to its full value and then to distribute the same in the old partners in their old profit sharing ratio. So here the entry will be goodwill account debit to A's capital account to B's capital account. और गुडविल हमारे पास कितनी है 40,000, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:2, तो ए को क्या मिला 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 24,000, और बी को क्या मिला 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 16,000. Now let us take the case when goodwill already appears in the book. तो अगर वो ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक में तो हम क्या करेंगे? जब न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं देन द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट शैल बी मेड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीड वैल्यू एंड द अमाउंट विच इज अपीयरिंग इन द बुक्स.